Hi, I'm Shalini Vasisht from Makeup Studio Shalini Vasisht, the founder. Today I will show you how to do smoky eyes. तो हमने मॉडल की स्किन को बिल्कुल इवन टोन कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द आई प्रेप. पहले आप आईज के ऊपर आई प्राइमर लगाइए. उसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए. फिंगर टिप से भी कर सकते हैं या आप ब्रश से भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल टेक ट्रांसलूसेंट पाउडर. पफ पे लगा के सारा एक्स्ट्रा स्प्रेड करके और उसको हल्के से प्रेस करिए इसके ऊपर. ये आपके आई शैडो को एक अच्छी बेस दे देता है. सिंस हम ऑलरेडी बेस कर चुके हैं, हम फाउंडेशन, करेक्टर, कंसीलर कर चुके हैं, वी डोंट वांट कि हम जो आई मेकअप कर रहे हैं वो नीचे गिरे. तो उसके लिए आप क्या करिए, ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर अच्छे से स्प्रेड करके लुक अप और उसको आईज के नीचे थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि जो भी आई शैडो गिरेगा इसके ऊपर वो आपकी बेस और अंडर आईज को स्पॉइल नहीं करेगा. हम सिर्फ उसको ब्रश आउट कर देंगे. आज हम स्मोकी आईज करेंगे. स्मोकी आईज मीन्स कि आप जो भी कलर लेंगे वो मैक्सिमम डिपॉजिट होगा अपर लिड पर और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो लाइट होता जाएगा. जैसे एक स्मोकी इफेक्ट, जैसे एक धुएं का इफेक्ट आ रहा है. तो मैक्सिमम कलर डिपॉजिट आप अपर आईलिड पे करेंगे और फिर वो हल्का 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 स्प्रेड होके स्मोकी इफेक्ट देने लगेगा. फिर आप एक हल्का सा डार्क कलर लीजिए, चाहे नेवी ब्लू लीजिए या हल्का सा ब्लैक लीजिए, एक्स्ट्रा निकाल कर और उसको क्रीज के आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करिए. एक फ्लैट ब्रश से you can take the lightest color, which is a highlight color, and apply it under the eyebrows. उससे एकदम eyes uplifted लगेंगी. Take the same highlighter and apply it inside the tear duct. For the eyebrows, first take a spoolie और आईब्रोज को ब्रश डाउन करिए. देन साइडवर्ड्स, आर्च अपवर्ड्स एंड द इनसाइड ऑफ द आईब्रोव अपवर्ड्स. देन टेक अ ब्राउन कलर सिंस हर आईब्रोज आर ऑलरेडी वेरी डार्क एंड स्टार्ट फिलिंग इन वेरी फेदर लाइट स्ट्रोक्स. आर्च को अपवर्ड्स and the inside of the eyebrows also upwards. Then set it with the spoolie. After you've completed the eye makeup, take a fan brush and just dust off the extra powder. तो जितना भी आई शैडो ड्रॉपिंग अगर होगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी. Before applying false eyelashes, take mascara and nicely apply it on your eyelashes. First on the top, then going down to up in a squiggly round motion. Like this, your lashes will not clump together. You take the eyelash curler, gently pull up the eyelashes and hold for maybe 5 seconds all over your upper eyelashes, and then place the eyelashes on it and just press them in. Take a gel eyeliner, remove the excess with an angular brush and start stamping. First the outer corner, taking it out, just stamp, pressing in. Now look, open your eyes, look this way, and now do the tear line towards the inside and join it. For lower lashes, you can take a thin wand
and do the tips and then the root up. Since my model has a thinner upper lip, I'm taking a product called a lip plump or a lip injection. You can take this and spread it all over your lips and leave it for some time. This will help the lips to plump up. This may tingle a bit because it has the plump in it, but it is absolutely safe. So you can just apply them on the lips and leave it for about 10-15 minutes. So this is going to give the time for the product to work on the plumping. Press your lips, so just take off any excess lip plumper and just see that the lips are not overly greasy. So I'm outlining the lips first from the Cupid's bow, then joining the outside. Similarly down and joining the outside to the inside, just to give the lips a slight extension. And since the eyes are smoky and heavy, we have to keep the lips very light. Always remember, when the eyes are heavy, we keep the lips light. और अगर हमारी eyes light है, then we can add color to the lips. So I'm using an almost nude shade to make the lips look light. So you can see how I have created smoky eyes with soft and light lips on my model, and she looks so pretty.